Yes. A very pleasant morning to one and all. Before we commence with our program, I request Dr. Mirza Junaid Beg to read the preamble for us. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of this nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से ही, यही मेरा अभिमान है, ये मेरा संविधान है। उद्देशिका का मंत्र है, लोकतंत्र ये गणतंत्र है, न्याय की ये नीति है, संपन्न की रीति है, अखंडता इसी से ही, यही निरपेक्षता का मान है, ये मेरा संविधान है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, ये मेरा संविधान है। Heartiest welcome to one and all present here. This is Ramsha Hayar, and we are here to celebrate Constitution Day. Celebrated as National Law Day or Samvidhan Divas in our country, Constitution Day is celebrated on 26 November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India. It reminds us that how such a gigantic soul and vast code of law and conduct preserved by our giants of knowledge for the safety and security of every individual as well as that of the country. Our constitution lays down the national objectives of India, such as democracy, socialism, secularism, and national integrity, and therefore to promote constitutional literacy, constitutional rights, and values which are enshrined in the Constitution of India. Every year, Constitution Day in our Faculty of Law Integral University is followed by various national level competitions like debate, essay writing, poster making, quizzes, and much more. Our faculty has been diligently celebrating this day as Constitution Day for 5 years in a row now. This year, we have organized national level quiz competition, national level essay competition, intra-university debate competition, and guest lectures. And with this, I'd like to invite our head of the department, Faculty of Law, Dr. Naseem Ahmed Sir, to address us with his illuminating ideas, knowledge, and experience to inspire us all. I once again request Dr. Naseem Ahmed Sir, head of the department, Faculty of Law, to kindly address us. As the guest has not yet arrived, I request Ms. Zoma Itrit Khan to take over the screen.
Meanwhile, I'd like to tell you all the objective of this event. The Constitution lays down the national goals of India: democracy, socialism, secularism, and national integrity. It spells out the rights and duties of the citizens. The Constitution of our nation is treated as a sacred document as the Bible. Hence, it is important for the student to acquire in-depth knowledge and understanding on the Constitution. Now I request Ms. Zomaitat Khan to take over the screen. We are facing some technical glitches. I request the audience to have patience with us. And the guest is about to arrive. So I request the audience to have little patience and cooperate with us. Before the guest arrives, and till we are able to resume with our minute-to-minute program, the Constitution of India has been celebrated by the Faculty of Law for the past 4 years. And in these past 4 years, we have been organizing various activities to celebrate the constitutionality, to celebrate the constitutionalism, the spirit behind our ground law. And for that particular, and to establish the Constitution of India, not only the leaders themselves, but the entire Constituent Assembly on 26th November 1949 had gathered the various principles to give us the basic fundamentals from which the various laws have been flown. The Constitution of India is one of the very authentic and exhaustive documents by which we can state the basis and the fundamentals of all the laws which we are enjoying today, through which our rights and liabilities are being decided, be it the fundamental rights, be it the fundamental duties, be it the directive principles given to the state to give the entire policies. All these particular principles which have been laid down under the Constitution is being celebrated on this day.
If we go into the history of 26th November, the the entire legal principles laid down on this particular day. But from a particular period of time, it is started to be established as a Constitution Day because it was recognized and adopted on 26th November. The partial fundamentals of constitutions were adopted on 26th November 1949. And since that particular day, we are enforcing upon us the laws which are there and which have established the entire legal structure of our country. Now, to check upon if our students are ready and we can connect them, then that would be seen, please. Sorry for the technical glitches and and the non-arrival of the guests for our Constitution Day celebration. The Constitution Day celebration in the Faculty of Law, Integral University, can be dated back since 2016. Since 2006, the University Grants Commission has also taken an initiative to consider the importance of the celebration of the Constitution Day. And since then, they have been given certain themes on which the Constitution Day is to be celebrated. Up till now, the entire emphasis was on the fundamental duties, the importance of fundamental duties along with the rights.
We all know that there is a popular saying that rights and duties are the two sides of the same coin, and both have to be balanced along with it. We cannot every time talk about our rights and then forget our duties. So that would be the entire initiation. This year, the University Grants Commission has given the importance to the basic fundamental document, and that was the preamble. That is the preamble, which states the basic objective of our grant now. Since our guests have arrived, I'm just broadcasting him so that we are able to. हाँ हाँ कैमरा मेरा है, वो कैमरा मेरा ऑन ठीक। Please carry on. Sorry for interruption. Please carry on. No problem, sir. Heartiest welcome to one and all present here. This is Ramsha Hayat, and we are here to celebrate Constitution Day. Our faculty has been diligently celebrating this day as Constitution Day for 5 years in a row now. This year, we have organized national level quiz competition, national level essay competition, intra-debate university, intra-university debate competition, and guest lectures. And with this, I'd like to invite our head of the Department Faculty of Law, Dr. Naseem Ahmed sir, to address us with his illuminating ideas, knowledge, and experience to inspire us all. Good morning to all present here. I convey my warm greetings on the occasion of 71 anniversary of the adoption of the Constitution of India to all of you. I, Dr. Naseem Ahmed Jafri, Dean Faculty of Law, Integral University, Lucknow, find immense pleasure to introducing the respected and the most distinguished guest and speaker of the day, Dr. Anurag Deep sir, Associate Professor, Indian Law Institute, New Delhi. Being a good man at heart might be his personal attribute, but being close to the student and the teachers, he's a dynamic personality in the entire higher education system. His notable work in the favor of our student of Hindi medium is commendable. It was in 2015, the 125th birth anniversary year of the Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, that the government of India decided to celebrate November 26 as Constitution Day every year. This is a commendable initiative to reiterate our gratitude to the chief architect of our Constitution. By their sheer wisdom, prudence, foresight, and diligence, the maker of our Constitution prepared a fantastic and vibrant document that reflects our ideals and inspiration on the one hand, and protects the future of all the Indians on the other. The Constitution of India lies at the foundation of the world's largest democracy. This is the supreme law in the country, democratic framework, and is continuously guide us in our endeavor. We Indians have had a tradition of maintaining our Indian identity while also welcoming noble ideas intending from all the sources. This cultural ethos also finds its reflecting in the making of our Constitution. Indian democracy is a duly regarded and respected all over the world. The people of our country deserve to be complimented for all the value and respect that the Indian Constitution has earned over the last 71 years. Today is a great opportunity to convey our gratitude to the makers of our Constitution who gave us a system to bring our revolutionary changes peacefully by way of constitutional amendments. In our country, constitutional avenues are available to address all kinds of situations that we may face. Therefore, whatever we do, we must first ponder whether our action is in conformity with constitutional boundaries, dignity, and morality. I am sure that being mindful of this constitution touchstone and consistent with our constitutional ideals, we will earn for India
its rightful place in the world as an ideal democracy. Let us resolve that we, the people of India, will constantly strive to achieve the ideals of our Constitution and realize the dream of millions of our fellow citizens. इन द एंड मैं एक बार फिर अनुराग दीप सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और उनका जो सहयोग समय समय पे हमें मिलता रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगेन वेलकम सर. थैंक यू. शहीदों के लहू की स्याही से संविधान बना है. हर दिन संभाल के रखो, मेरा देश महान बना है. Thank you, sir, for your guidance and moral support. Now, I would like to call Mr. Ahmed Aman to introduce our chief guest. जीवन तभी सफल माना जाता है जब खुद का परिचय खुद न देना पड़े. We do not need to introduce ourselves with our words, but our gestures and our way of doing work introduce ourselves in the best way. These quotes define the persona of our guest, Dr. Anurag Deep sir, in the best way. I, Ahmed Aman, take the privilege to introduce Dr. Anurag Deep sir. Currently, he is serving as Associate Professor in Indian Law Institute, New Delhi. He completed his legal studies from BHU and earned his PhD from Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur. Sir used to teach in a very unique way. He used to teach the case laws of Supreme Court to the students who were from non-English medium in Hindi language. Also, Sir has an experience of more than 18 years in teaching, and also papers over 50 are being published in very reputed journals such as Indian Law Institute, Pariksha Manthan, LexisNexis, etc. Sir has basic and very keen interest in the field of criminology, constitution, and human rights. With this, I would like to welcome Sir for his very grateful and thought-provoking lecture. Thank you, sir. Should I start or any other formality is there, Naseem ji? Okay. Yes, sir, please go ahead. Thank you. Okay. So it is a great pleasure to interact with learned faculty members, respectable management, students, and other learned dignitaries of the college. Intellectual discourse, we all love, we all like it. 26 November has added to the pleasure. हमारी खुशियों को थोड़ा और आज पंख लग गए हैं क्योंकि आज 26 नवंबर है. अदरवाइज भी जो है आपके साथ इंटरेक्ट करना तो बहुत अच्छा है. And 26 November, 26 November, as many people know that it is celebrated as Constitution Day. In last maybe 3-4 years, this trend has increased. And due to COVID, there is almost an outburst of such type of program. And that is good. That is good. Now, I need not to go to Lucknow for these programs, or anyone expert has not to go to the Lucknow for this purpose, and we can speak from our place. So there is an easy access, and internet has made this accessibility easier and cheaper also, because sometimes the financial liabilities are also there. So internet, especially COVID-19, has many dangerous and deadly aspects, but then COVID-19 has certain positive aspects also, and this is one of them, that through internet now it is easier to access resources and to connect with each of us. I again congratulate you
See, this Constitution Day is important because not because we are reaching a milestone of 70 years or 71 years. You see your surrounding. आसपास देखिए आप. Our neighbors, please see. Pakistan, the country that was divided on the basis of religion, and that has promised probably कि हम अलग हो जाएंगे तो शायद हम ज्यादा बेहतर देश देंगे, हम लोगों के हितों की रक्षा करेंगे, हम इक्वलिटी के आधार पर एक समाज बनाएंगे और इसलिए हमें अलग देश चाहिए. वहां पे कैसी स्थितियां हैं हम देख रहे हैं. डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इसके पहले भी 2-3 बार वहां पे सत्ता का, जिसको हम पावर कूप कहते हैं, कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को सेना ने हटा दिया. 2-3 बार ऐसा हुआ. कोर्ट्स की पावर बहुत लिमिटेड है. आप बगल में देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए. चाइना में फंडामेंटल राइट की बात उस तरह से कर ही नहीं सकते. इंडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना डज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फंडामेंटल राइट. सारे लोग चुनाव लड़ ही नहीं सकते. कुछ खास पार्टियां ही लड़ सकती हैं चुनाव वहां पे, जो कि वहां की आइडियोलॉजी में विश्वास करती हो. दोज हु बिलीव ऑन दैट आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, वही चुनाव लड़ सकते हैं. श्रीलंका देख लीजिए आप, कितना डेडली, हाउ डेडली वाज होल जर्नी. बड़े बड़े लीडर्स वहां मारे गए. एलटीटी का संकट रहा फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. म्यांमार, यू कैन सी लास्ट 50 इयर्स में क्या क्या हुआ म्यांमार में. बांग्लादेश भी देख सकते हैं. These countries are not ideal, but they are neighboring countries. So if we compare with our neighboring countries, go to Afghanistan. ये neighboring countries जो है उससे अगर आप तुलना करते हैं तो then we find that our democracy is very safe democracy. Our democracy, our constitutional democracy has something to pride. क्योंकि we had consistent elections. It has not done great things. I agree. Many things has yet to be done. COVID has shown how infrastructure facility is too weak. बंद कर दीजिए. Infrastructure facility is so weak. Poor people, needy people, middle class people are moving from pillar to post for hospital facilities. Indeed, sometimes some people who can afford also, they are crying that bed is not available in our country. 70 साल हो गए हमारे देश को. It is not that everything is a matter of pride, but there are certain things which is a matter of pride. Let us begin with the positive note. That we have consistent elections. In the elections, people have given their vote, subject to one exception of emergency, 2-3 years, 75 to 77, 2 years. Almost we had a democratic process. We had an elected parliament. We had people who became prime minister and chief ministers who were from very, very poor background. In Bihar, Karpuri Thakur was a chief minister from very, very poor background. Mamata Banerjee, currently the chief minister of West Bengal, from very humble background. Very simple living. We may agree, disagree with her, no problem. That is a different thing. We have presidents who started their journey from very poor background.
We have a current prime minister. It is told that he with his father used to sell tea. So our democracy has the prime minister like Jawaharlal Nehru, who was from a very rich background but had done great job. But our democracy has people from poor background also. That is the beauty of our democracy. Our agreement and disagreement is a different matter, and that will always go in democracy. This is regarding poverty. But democracy does not mean only elections and getting power. That is one classical meaning of democracy, dear friends. Classical meaning of democracy means there are elections and people are elected, and elected person become our representative, and representative then choose ministers and prime ministers. But democracy has a modern meaning also. And what is the modern meaning? Modern meaning means, is there any respect for democratic values? Are democratic values on priority? And what are democratic values? That are mentioned in the preamble of the Constitution. Justice, social, economic, and political. This is one of the democratic value. Freedom of faith, freedom of expression, faith, worship. This is a democratic value. Liberty, equality, and fraternity. This is a democratic value. If elections are there, but there are no respect for these democratic values, in a technical sense, we can say it is a democracy. But in constitutional sense, in modern sense, we would say that democracy is lacking something. So the test is how poor people are being given their rights. There are some indication that poor people have achieved highest position. Let us talk about a democracy is known by how do you respect the minority community in that society. If minority community is respected in that society, not just respected, not just honored for tokenism, but for real empowerment, minority of all types, religious minorities, linguistic minorities, other types of minorities, they are empowered. So we can see some illustrations. Our presidents, we had presidents with minority communities. We had a prime minister with minority community. We have chief ministers, we have governors with minority community. We have chief justices of India from minority communities. Not one, not two, more than two. We had many Supreme Court judges from minority communities. We are in the field of law. We have vice chancellors from minority communities. So we have tried, India has tried to respect poor people who can attain political positions. India has tried to respect. I'm not telling that everything is good, everything is hunky-dory. No. We have tried to, India has tried to give empowerment to minority people. There are many things that is yet to be done. Then how do we treat our female, which are half of the population? Did we try to do? Yes, we have tried to do something. And again, some of them have attained power. They became prime minister. They became president also, female community. They became chief ministers. They became governor. One of the governor of UP, current governor, is from female community. Head of the opposition party was Sonia Gandhi, who was from female community. Among ministers, we have defense, we have finance minister from female community.
We have vice chancellors from female community. We have Supreme Court judges, unfortunately, no Chief Justice till date. But some Chief Justices of the High Court from women. How did we treat to our other weaker people, like those who are scheduled caste, scheduled tribes? Again, there are some positive lines. They attained political position. People from scheduled caste, scheduled tribe community, they attained ministership. Some of them attained judicial position also. A lot needs to be done. Many of them are professors. Some became vice chancellor also from SC/ST community. There are many units where they have achieved in last 70 years some milestone, but more needs to be done. So in a sense, we can say that Constitution has not achieved that it wanted, but it is in right direction. Sometimes there can be some departure, but more or less we are on the track where we can give empowerment to poor people, empowerment to minority people, empowerment to female, empowerment to those belonging to scheduled caste, scheduled tribe and likes. Then let us see. So this is government, this is executive. Then we have the Supreme Court of India. Now, Supreme Court of India is one of the most powerful Supreme Court in the world, not only in India. India, it is already there, most powerful. But it is most powerful Supreme Court of the world. Why? There are 2-3 reasons. One is that the Supreme Court has original jurisdiction under Article 32. That it can directly hear the petitions under 32. It is not required to hear all the petitions under 32. But it has original jurisdiction. Why it is not required to hear all petitions? Because we have high courts also. Recently, there was a controversy when Chief Justice said that we want to discourage Article 32. He was on principle. He was misunderstood. He was on principle. We have high courts. Power of high courts under 226 is more than the power of the Supreme Court of India. And Supreme Court is only one. How can a person approach Supreme Court everywhere, every time? So the high courts have been given powers, and Supreme Court should interfere not in a routine matter, but in all those cases. Suppose there is a case of multi-jurisdiction. There is something like, suppose arrest warrant is issued by 3, 4, 5 states. FIR registered in 3, 4, 5 states. Then the Supreme Court has, obviously it has the only jurisdiction, because only one high court can pass the order and the person can be arrested from second high court, second state jurisdiction, so Supreme Court. So when he say that we want to discourage, it does not mean he want to stop. He want to say that Article 32 needs to be regulated and it should not replace 226. So people should go to the High Court. It is easy also, it is feasible also. And you come to 32 because you are powerful, you are rich and famous, you can come to the Supreme Court. Arnav Goswami can go to the Supreme Court. Of course, he came from High Court. Vinod Dua can come to the Supreme Court directly. Prashant Bhushan can directly come to the Supreme Court. Dushyant Dave can directly go to the Supreme Court. Our ministers can directly go to the Supreme Court. Some rich persons can go to the Supreme Court. If this trend continues and Supreme Court is engaged in 32 type petition for all persons who are powerful,
who have media coverage, about whom people can ask questions in the parliament, what will happen to the poor persons? This is one such reason when he says that Article 32 has to be discouraged, he means on principles that we have high courts and high courts authority should not be undermined by this. Indeed, it has been done. What is so? Let me remind you. Let me just discuss one small instance that I have just discussed in another webinar today in Indore. That ILI has published a book on bail, law of bail, 2018 book that was jointly written by, edited by Professor Manoj Kumar Sinha, a great international law expert and our director, a good human being, and by me. So when the book launch ceremony was there in ILI, we have professor from USA to bless the occasion. We have Justice Arichit Pasayat also, former Supreme Court judge. So I was interacting with that professor of USA, and his good name is Ved P. Nanda, Professor Ved P. Nanda. He has been delivered Padma Bhushan also. So Ved P. Nanda asked me, Professor Ved P. Nanda sir asked me, Anurag, why did you and Manoj sir has written a book on bail law? Is it so important in India? And I was surprised. Anybody will be surprised. A professor from America says that bail law is important. Why? But yes, sir, it is very important. Then he says, why? It means, why is the Supreme Court very much engaged in bail law? I told, yes, sir, Supreme Court is very much engaged in bail law. Then he says that I do not understand why Supreme Court is engaged in bail issue. Is it a matter of interpretation? I told, no, sir, there are no matters of interpretation of certain provision, but people are not granted bail or granted bail. Then state comes to appeal or people come to appeal in the Supreme Court. They said, why should Supreme Court entertain that once the High Court has decided the matter? How many Supreme Court cases might be being decided? 10 cases maybe. The Supreme Court might be listening 10 cases every month. I told, sir, on bail there will be hundreds of matter every month in the Supreme Court of India. He was astonished. He told that in the USA there is hardly any case that goes to the Supreme Court of India, Supreme Court of USA. Bail matters are basically decided in the district federal courts or maybe circuit courts. It does not go to the Supreme Court. Bail, of course, bail, people are arrested there also. But it has to be decided by the High Court. Supreme Court is not made for all purposes of interpretation of fact. It is made for the purpose of interpretation of constitutional provision basically. And if there is any legislative provision, CRPC के provision का क्या interpretation होगा, इसमें क्या होगा, इसमें is लिखा है, इसका क्या मतलब होगा, shall लिखा है, may लिखा है, may का मतलब shall है कि नहीं है, इसका interpretation literal होगा कि इसका interpretation liberal होगा. अगर ऐसा कोई मैटर आता है तब तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना चाहिए. But for factual matter, why should Supreme Court interfere? He was very surprised. Well, okay, I thought that, therefore I was surprised. He said, Professor Nanda says that, okay, I thought, why do you write on bail? Sir, I told her, sir, there will be thousands of cases decided by the Supreme Court till date. And hundreds of cases are decided every month by the Supreme Court on bail issue here. Friends, we may take it as a merit. We may take it, Professor Ved P. Nanda took it as a demerit. That High Court should decide bail matter and things could not come to the Supreme Court, and to some extent he's right. Supreme Court is made to deal with interpretation matter, and what is happening? Many issues of constitutional interpretations are pending. It takes 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years to decide a matter. Let me give you a small illustration. In 2012-13, a case was decided on membership crime, whether membership of a terrorist organization, unlawful organization should be penal or not. We know under section
143 of IPC, mere membership of unlawful assembly in IPC, mere membership of unlawful assembly has been made penal. That if there is an unlawful assembly, then if you become member, I become member intentionally, then even if the assembly has not done anything, it is punishable. Similar provision has been made in TADA, where membership of a terrorist organization or unlawful organization has been made punishable. It is still there in UAPA. 3 cases were decided by the Supreme Court. Supreme Court has declared in 3 cases that membership cannot be made penal unless some violence takes place. In other words, Supreme Court wants to say that there is a terrorist organization like Babbar Khalsa, like Al Qaeda. I become a member of Al Qaeda. I say that my membership is a passive membership. According to Supreme Court judgment, membership is okay. This membership is but not punishable. But later on, this was appealed to this has gone to review. In 2015, the Supreme Court said that no, this interpretation seems bad. A higher bench will decide the case. 2015 onward, this is 2020. This is a matter of constitutional interpretation. The case is not yet decided in 4 years. The matter of constitutional interpretation. Why? Because we are engaged in routine matters. So, first important task the judiciary should do is to go back to its main business of interpretation of constitution and interpretation of law, because they are pending. Many cases are pending. So interpretation matters should be decided as early as possible, and the court should not interfere in all matters, even if they are matters of personal liberty. If a high court can decide, let the high courts decide, rely on them, and interfere only in those cases when it is very, very essential. And if a person approaches to the Supreme Court, then unless it is essential, the Supreme Court should say that please go to the High Court, or at least explain why you have not gone to the High Court. So we should not take it like this, that Supreme Court has declined to issue in a particular case. No, that is not like that. There are many cases where Supreme Court has declined, but they did not come to notice. So this is what we have done in last 70 years. There are many positive things, but many things has to be done further. At the level of parliament, what we can do, what we should do, the first thing is that we should stop criminalization of politics. In all parliament, especially legislative assemblies, a number of people with criminal background, not just charges of simple charges, कर्फ्यू लगा था तो उसका उल्लंघन कर दिया, और मूवमेंट कर रहे थे जनता का तो इसलिए पुलिस, ऐसा नहीं. मर्डर चार्जेस आर देयर, rape charges are there, kidnapping charges are there. They are our representative. We have chosen them. Sometimes they become minister also. TADA charges are there. They have become many member of parliament. We have chosen them. So the first task that parliament should do is to stop criminalization. And there are many reports. They say very simple, that if charge sheet is filed in the Supreme Court, charge sheet is filed in the trial court of offences where there can be life imprisonment, those persons should not be allowed to contest election till the matter is decided finally. This is a simple thing that law can be passed, but the parliament is not doing, and all political parties have great friendship in that issue. Be they BJP, be they Congress, be they left party, be they BSP, be they SAPA, everyone agrees on this point. नहीं, criminalization नहीं, छोड़ दीजिए. What is this? Second pattern, should the contribution, political contribution, financial contribution made to the political party be
come under RTI, all parties agree. No, 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 no. हम तो इनकम टैक्स की डिटेल देते ही है. You take Congress party, you take left parties, you take BJP, you take Shiv Sena, everybody agrees. No, हम तो जो है हम RTI में नहीं आएंगे. अरे भाई पब्लिक फंक्शन कर रहे हो, क्या दिक्कत है आने में? So I think these two major steps needs to be done. First, to remove from criminalization. Second, to remove from corrupt practices. How should executive do it? What are the changes in executive should do? Now, executive is political executive and civil executive. And executive is in the control of maybe ministers. There is no doubt they are control of prime minister, they are control of chief ministers. And if this is a BJP rule state, they will do like what they say, that we say his master's voice, HMV. If it is in Maharashtra, if it is in UP, they will follow what Yogi dictate is. If in Maharashtra, they will follow what Shiv Sena says. If it in Tamil Nadu, they will follow what Tamil Nadu Chief Minister says. If it is West Bengal, they will follow what the Chief Minister Mamata Banerjee says. Executives reform has to be there, and Prakash Singh judgment needs to be enforced with the government is not ready. Almost all government, and we intellectuals have to put pressure on them. When they come, please ask them, why are you not doing it? This will create pressure. Now executives also, they are also, why should they always surrender before the executive, the political boss every time? There are laws. Indeed, in many cases, the chief ministers and the ministers do not press them. Who stops them registering FIR? Tell me. Is the chief minister telling not to register an FIR? But when you go to police thana, you go to register an FIR, you are a lawyer, you are a law teacher, you are a law student. In many cases, your FIR may not be registered. It is not that chief minister has told them not to register FIR. So the executive have to change their approach. I remember when in ILI, we conduct training program for police officers. In one, I requested them that online registration of FIR is there. And then online things are now very common. Can we make all FIR online? These days, in many states, including UP, selective FIRs can be registered online also. But then in some cases, you have to go to Thana. They are not accepted. They are not, no investigation takes place in many cases. Though it has come to as a very great relief, because some cases action has been taken on online FIR. So the police officer said, sir, online FIR होने में बहुत प्रॉब्लम है. एक तो जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम है. FIR एक ही आदमी 3-4 जुरिस्डिक्शन से FIR दर्ज कर देता है. अरे भाई 3-4 जुरिस्डिक्शन से FIR दर्ज कर देता है, आप आइडेंटिफाई कर लें, आधार कार्ड के आधार पर कर लें, आप ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर कर लें, ताकि मल्टीपल FIR है तो उसको एक FIR को आप बाकी FIR को आप रिजेक्ट कर दें, एक FIR एक्सेप्ट कर लें. क्या दिक्कत है इसमें? अब तो टेक्नोलॉजी आपके पास है. थोड़ी दिक्कत होगी पर क्या दिक्कत है, वो कर रहा, उसको वार्निंग दे, और अगर लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया है तो फिर हमारे पास कार्रवाई करने का भी आधार है. Why don't you do this? सेकेंड आर्गुमेंट पुलिस ऑफिसर दे, सर बहुत सारी फर्जी FIR हो जाएगी. भैया फर्जी FIR हो जाएगी तो फर्जी FIR के लिए भी तो प्रोविजन है आईपीसी में. कोई आदमी फर्जी FIR दर्ज करता है तो उसकी प्रोविजन है कि नहीं? अगर उसने जानबूझ के फर्जी FIR दर्ज किया है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, पर ऑनलाइन FIR में क्या दिक्कत है आपको? नंबर ऑफ FIR बढ़ जाएंगे, ये बात तो सही है, तो अच्छी बात है. क्राइम आपके नोटिस में आ रहा है, क्राइम नोटिस में आ रहा है तो आप पहले ही पकड़ लेंगे, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए. एक छेड़खानी की घटना हुई, छेड़खानी की घटना को आप रोक लेते तो मारपीट की घटना नहीं होगी, मारपीट की घटना को रोकते तो हत्या की घटना नहीं होती. क्या हुआ था पहले हरियाणा में?
एक पॉलिटिकल परिवार के व्यक्ति ने कुछ छेड़खानी की लड़की के साथ, उसके बाद कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे, उसका प्रेशर दिया, उसके खिलाफ 2 साल 3 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ, पर चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो थे बहुत स्ट्रांग लोग थे, ये जो व्यक्ति था बहुत गरीब आदमी था, सिंपल आदमी था, इसने कहा मैं क्या लड़ूंगा, उसके दबाव में आ गए, अपना कंप्लेंट वापस ले लिया। अभी 2020 में उस व्यक्ति ने फिर से उसके ऊपर दबाव डाला, उसको अपहरण करने का प्रयास किया, कार में ले जाने का प्रयास किया, और फिर उसने मना किया, वहां गोली मार दी उसको। हम लोग सब इस केस को वीडियो पे देख चुके हैं। ये एक इलस्ट्रेशन है, ये हर स्टेट में हो रहा है इसी प्रकार का केस। पहली बार जब हुआ था तभी ध्यान देना चाहिए था। पहली बार में कोई फांसी पे थोड़ी चढ़ा देना है, वार्निंग देना है, नजर रखना है। लॉ है हमारे पास। एग्जीक्यूटिव को किसने रोका है? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं रोका है। कुछ दबाव आते होंगे, दबाव आप एग्जर्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहूंगा एग्जीक्यूटिव के बाद, वो है जुडिशियरी। जुडिशरी क्या कर सकती है आगे जो रिफॉर्म्स के थे? पहले तो 2 बात ध्यान रखनी है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो। लेट मी बिगिन विथ, बिफोर आई कम टू जुडिशियरी, because all the cases will come to the judiciary finally. Freedom of speech and expression is mentioned in our constitution at least 3 places. In the preamble itself, there is freedom of expression. Then fundamental right part, article 19, freedom of speech and expression, followed by 8 restrictions, reasonable restrictions. Then our member of parliaments and MLAs, they have a special privilege of freedom of speech and expression. पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कोई बात कहेंगे तो कोई मुकदमा नहीं होगा उनके खिलाफ, स्पीकर कार्रवाई करेंगे, ठीक है, होना चाहिए। Our constitution has given respect to freedom of speech and expression at least at 3 places. That is the importance given. Why? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उन्होंने they have suppressed our voice, genuine voice. हमने कोई उनसे चांद नहीं मांग लिया था। हमने कहा था हमें अपना रूल दे दो, डेमोक्रेटिक रूल दे दो। शुरू में तो कहा गया राइट्स दीजिए आप। वो लोकपाल बाद तिलक को 3 बार उनके ऊपर सेडिशन के केस चलाए गए। महात्मा गांधी के ऊपर भी सेडिशन के केस चलाए गए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आरएसएस के जो हेड थे डॉक्टर हेडगेवार, उनके ऊपर भी सेडिशन के केस चले, 2 बार जेल गए वो। नंबर ऑफ पीपल हैव गॉन फॉर सेडिशन केसेस इन जेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वॉइस की थी और कहा था कि हमें अपना सेल्फ रूल दे दो, हमें राइट्स हमारे दो, अपना गवर्नेंस ठीक करो। तो इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, in those days freedom of speech and expression was main concern, and therefore freedom of speech and expression was given priority. But when the constitution was being made, we have two types of model. One model was USA model. यूएसए मॉडल क्या है? यूएसए मॉडल में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है संविधान में, इस सेंस में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टिल डेट डज नॉट टॉक्स अबाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्सप्रेसली। ऑफ कोर्स देयर आर पुलिस पावर डॉक्ट्रिन व्हिच इज डेवलप्ड बाय जुडिशियरी इन द सुप्रीम कोर्ट। दिस वाज फर्स्ट मॉडल। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट देयर इन यूएसए। और इसलिए वहां पे आप बहुत सारी ऐसी बातें कह सकते हैं जो यूजुअली दूसरी जगह नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि उस तरह के एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां आप देश का झंडा जला सकते हैं, अमेरिका का झंडा जला सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वहां इस बात की। दूसरा मॉडल था इंग्लैंड का मॉडल। इंग्लैंड के मॉडल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट होने की बात ही नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर और उसकी टीम, उन्होंने बहुत गहनता से विचार किया हमें कौन सा मॉडल लेना चाहिए, और उन्होंने एक बीच का मॉडल अपनाया। यूएसए का मॉडल था, यूएसए मॉडल वाज राइट्स बेस्ड मॉडल। यूके मॉडल वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर, बट नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इंडिया में जो मॉडल बनाया डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने,
बहुत सोच समझ कर। डॉक्टर अंबेडकर वाज ए ग्रेट ग्रेट ल्यूमिनरी, ग्रेट विजनरी। उनका नहीं, हम दोनों में से किसी मॉडल को नहीं अपना सकते। इन आवर कंट्री देयर आर डाइवर्सिटीज, मेनी रिलीजियस बिलीफ्स आर देयर। अमेरिका में आप रिलीजियस जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कोई बात कह देंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे देश में तो लोग जल मरेंगे, कट मरेंगे इस काम के लिए, अगर आपने कुछ धर्म के बारे में कोई ऐसी बात कह दी तो। He understood the reality of our country. We are a different type of society. उन्होंने कहा हमारे देश में जो मॉडल होगा वो मॉडल होगा नॉट राइट्स विथ रिस्ट्रिक्शन मॉडल। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया, साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। इनिशियली 1950 मॉडल वाज डिफरेंट। नसीम साहब आप बता दीजिएगा, मैं तो आप जानते ही हैं एलएलएम में जब क्लास होती है, नहीं सर, क्लास चलती है, लग रहा है आप बोलते रहिए, हम लोग सुनने को तैयार है सर, nice, okay. समय मिलता है। No, so nice. नहीं सर, बहुत अच्छा। प्लीज जस्ट इंडिकेट अगर लोग बोर होने लगे। अच्छा हाँ, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर नहीं लीजिए कि सर, वो बोर की बात नहीं सर, आप ऑनलाइन लाइव में बोर का कोई मतलब ही नहीं, इंटरेस्टिंग so चल nice रहा है of सर, you, so nice of इतनी you. सब फैक्ट्स आप आज जो अगर चैट बॉक्स में आप अलाउ करें तो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन भी डाल दें ताकि बाद में मैं बात कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और लर्नड स्टाफ है, अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिर भी आई विल ट्राई बिकॉज दिस इज सच ए बिग इशू, सच एन इंटरेस्टिंग इशू, और आप जैसे अच्छे ऑडियंस है तो आई विल ट्राई टू फिनिश इट मे बी 10-15 मिनट्स। सो तो इनिशियली जो रिस्ट्रिक्शंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिस्ट्रिक्शंस कम थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जब हुई उस समय सेडिशन और पब्लिक ऑर्डर ये भी रिस्ट्रिक्शन में डाला गया था। सरदार पटेल की कमेटी थी, सब कमेटी, उसने डाला था, लेकिन सेडिशन एज ए रिस्ट्रिक्शन का बड़ा विरोध हुआ। कहा जो अंग्रेजों ने किया वही आप कर रहे हैं, तो सेडिशन को तो नहीं रखा गया और पब्लिक ऑर्डर को भी हटाया गया। लेकिन एक साल के अंदर ही दिक्कतें सामने आने लगी। केसेस हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के आ गए। रोमेश थापर का केस आ गया, ब्रजभूषण का केस आ गया। इसमें कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप कर्टेल कर सकते हैं तो जो दिए गए रिस्ट्रिक्शन है उसके आधार पर ही करेंगे। क्या दिए गए रिस्ट्रिक्शंस है? सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के आधार पर कोई रिस्ट्रिक्शन उस समय नहीं था। तो कहा गया पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर छोटी चीज है, नेशनल सिक्योरिटी बड़ी चीज है। मान लीजिए कि गाजियाबाद में एक जगह कहीं विस्फोट हो गया, बम विस्फोट हो गया, तो पब्लिक ऑर्डर का मैटर हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी भी हो सकता है। विस्फोट क्यों हो गया? पटाखे की फैक्ट्री थी, इलीगल फैक्ट्री थी, विस्फोट हो गया, पब्लिक ऑर्डर का मैटर है। लेकिन अगर किसी आतंकवादी ने, किसी उग्रवादी ने बम लिया हुआ था, सुसाइड बॉम्बर था, उसने विस्फोट कर दिया या विस्फोट हो गया, तो वो आतंकवाद का मैटर है। तो हमें हर विस्फोट, हर गोलीबारी पब्लिक ऑर्डर से सॉवरेनिटी की तरफ नहीं चली जाती। सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी एक अलग बात है और पब्लिक ऑर्डर अलग बात है। राम मनोहर लोहिया के जजमेंट में इस बात को क्लियर किया गया कि पब्लिक ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन 1950 की बात करते हैं तो 1950 में इट सो हैपेंड कि दो अखबार थे और दोनों दो विंग के अखबार थे। देखिए आप, एक अखबार कम्युनिस्ट पार्टी से निकलता था बंबई में, क्रॉस रोड, और एक अखबार निकलता था ऑर्गेनाइजर जो संघ का था, आरएसएस का था। आरएसएस का अखबार पंडित नेहरू को आलोचना करता रहता था हमेशा कि आपकी पॉलिसी खराब है, पाकिस्तान में ये दिक्कत हो रही है, पाकिस्तान में वो दिक्कत हो रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पंडित नेहरू ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जब पाकिस्तान के बारे में खबरें छापेंगे तो हमें थोड़ा दिखा देंगे, इट इज टाइप ऑफ प्री सेंसरशिप, दैट वाज नॉट परमिसेबल, बट पंडित नेहरू हैज टेकन अ वाइज डिसीजन दैट टाइम। क्रॉस रोड जो था वो कम्युनिस्ट अखबार था, लेकिन वो भी कांग्रेस की आलोचना करता था। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कैपिटलिस्ट पॉलिसी है, आप अमेरिका के साथ मिल गए हैं, अमेरिका कंस्पिरेसी है।
तो इन दोनों अखबारों के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, दोनों के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। दोनों मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूछा कि भाई क्या दिक्कत हो रही है इन अखबारों के पब्लिकेशन से। तो कहा सर, अखबारों के पब्लिकेशन से लोक व्यवस्था खतरे में पड़ रही है, पब्लिक ऑर्डर खतरे में पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 6 जजेस थे, ध्यान रखिएगा, उस समय बड़े आश्चर्य की बात है, 6 जजेस थे उस समय, सारे जजेस थे उस समय। जनरली 5 जजेस, 3 जजेस, 7 जजेस की बेंच होती है, 6 जजेस थे। 6 में से 6 जजेस ने पूछा कि दिक्कत क्या हो रही है, तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने पूछा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे, पब्लिक ऑर्डर तो आपका रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं 19(2) में। 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। क्या इन दो अखबारों के कारण नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है? सरकार बता नहीं पाई, नेशनल सिक्योरिटी तो खतरे में नहीं पड़ रही है। तो फिर क्या हो रहा है बताइए? पब्लिक ऑर्डर नहीं है तो कैसे हम लगा दे, कैसे? तो 5 जजेस थे, उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता। एक जजेस थे फजल अली, उन्होंने तभी भांप लिया था कि नहीं, कई बार अखबारों के हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कारण भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो डिसेंटिंग नोट था उनका। तो मेजोरिटी ने कहा रमेश थापर और ब्रजभूषण में कि नहीं, आप अखबारों पर प्रतिबंध इस आधार पर नहीं लगा सकते जब तक कि आप यह ना दिखाएं कि नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है। तो अब समझ में आ गया लोगों को कि ये तो पब्लिक ऑर्डर लाना पड़ेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो ओरिजिनल ड्राफ्ट में पब्लिक ऑर्डर को रखा था, उस पब्लिक ऑर्डर को फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। हमारी रिस्ट्रिक्शन और पार्लियामेंट ने कम कर दी। कौन थे पार्लियामेंट में? फ्रीडम फाइटर थे, पंडित नेहरू थे, अंबेडकर थे। तो ये बड़े बड़े लोग थे और पब्लिक ऑर्डर को एक रिस्ट्रिक्शन बनाया गया। फिर थोड़ा जर्नी आगे बढ़ती है। 1950-1960 के आसपास 2 घटनाएं घटने लगी इंपॉर्टेंट। एक घटना यह घटी कि चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। वो अभी भी कह देता है, कभी कभी लद्दाख को बोल देता है, कभी अरुणाचल प्रदेश को बोल देता है। देखिए, जो कमजोर कंट्री होता है, जो कमजोर आदमी होता है, उसको पड़ोसी भी आंख दिखाता है। स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हर एक को आत्मिक रूप से मजबूत हो, शारीरिक रूप से मजबूत हो, इंटेलेक्चुअल रूप से मजबूत हो आप। क्योंकि शक्तिशाली जो होते हैं उनको उनको दूसरे लोग आंख नहीं दिखाते। हिंदुस्तान कमजोर देश रहा, चाइना जब तक उसमें आंख दिखाए, पाकिस्तान आंख दिखा देता है। चाइना ने कहा अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है, ये वो। अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि भारत के भी कुछ लोग चाइना के क्लेम का समर्थन करने लगे। उनका एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कि माओ को बड़ा लीडर मानता था। कोई बात नहीं, मान सकते हैं आप बाहर के लीडर को बड़ा। अरस्तु हुए हैं, सुकरात हुए हैं, लिंकन हुए हैं, बाहर के ही हुए हैं, हम उनको महान मानते हैं। हमारी तो संस्कृति ऐसी है कि जो है हम तो जो व्यक्ति दुश्मन है उससे भी सीखते हैं। जब रावण मरने लगा तो भगवान राम ने क्या कहा लक्ष्मण को कि जाके रावण से भी ज्ञान लो। हम तो किसी से भी ज्ञान लेने को तैयार है। आनो भद्रा कृतो यंतो विश्वता, सारी दिशाओं से आने दीजिए ज्ञान को। ये हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत ही व्यापक संस्कृति है, हमने सबको एक्सेप्ट किया है, तो हम ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चाइना का क्लेम, वामपंथी जो कुछ वामपंथी, सभी नहीं, कुछ वामपंथी लीडर थे, वो कहने लगे चाइना का क्लेम थोड़ा बनता है। चाइना के क्लेम को सही साबित करने में लग गए। अभी भी कभी कभी हो जाता है, हम गुस्से में आकर कह देते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने गुस्से में कह दिया क्या, हम चाइना से सपोर्ट लेंगे 370 के वापस लेने का। अरे आप यहां लड़ाई कर सकते हैं, कोर्ट में मामला है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कल को अगर बीजेपी का बहुमत नहीं रहेगा, कांग्रेस का आ जाएगा, 370 आ जाएगा वापस। और इसके लिए आप कहेंगे कि चाइना सपोर्ट लेंगे हम जाके? गुस्से में कह दिया होगा, मैं मानता हूं कि उनकी उम्र हो गई, गुस्से में उन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं। गुस्से में आदमी कई बार गलत बातें कह देता है। तो वो चाइना से लेंगे सपोर्ट। एक तो ये घटना घटी। एक और घटना दक्षिण भारत में घट रही थी जो कि शायद नए विद्यार्थी नहीं जानते होंगे। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा, हमें आजाद कर दो, आजाद कर दो, आजाद कर दो। खालिस्तान में भी चल रहा था, पंजाब में कत्लेआम हुआ पूरा खालिस्तान में। सिखों के एक आतंकवादी ग्रुप ने हिंदुओं को बहुत मारा, कत्लेआम कर दिया। हमें खालिस्तान अलग चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ लोग कभी कभी हल्ला करते हैं।
दक्षिण भारत में 1960s में जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, हमें अलग द्रविड़ नाडु देश दे दो, हमें तमिलनाडु जैसा एक अलग देश दे दो, हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? हमारी आइडेंटिटी अलग है, नॉर्थ इंडियन से नहीं मिलते, हमारी लैंग्वेज अलग है, नॉर्थ इंडियन से नहीं मिलते, हमारी कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडियन से नहीं मिलते, नॉर्थ इंडियन के साथ हम एसिमिलेट हो जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हमारी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो हिंदी के विरोध में आंदोलन भी करते हैं। तो उस समय वो जो आंदोलन था, वो जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को वहां के पॉलिटिकल पार्टी हवा दे रहे थे। उन्होंने इसको पोल इश्यू बना दिया, चुनाव में इश्यू बना दिया कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम अलग द्रविड़ नाडु एक देश बनाएंगे इंडिया से अलग। और इस कारण वहां पर साउथ के लोगों ने थोड़ा सा एलटीटी मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, हमारे अपने लोगों ने सपोर्ट किया एलटीटी मूवमेंट को। हम भी दोषी हैं आतंकवाद को बढ़ाने के, एलटीटी के आतंकवाद को बढ़ाने के हम भी दोषी हैं। हमने भी हस्तक्षेप किया वहां पर आतंकवाद में, हमारी गलती थी वहां। तो ये 60 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अन्नादुराई जी चुनकर आए, चुनाव में जीत गए, लोगों को बहका दिया। बहकाना बहुत आसान होता है। लोगों को बहका दिया कि ये नॉर्थ के लोग आकर के नौकरी ले रहे हैं, सारी जगह जो नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो हिंदी भाषी लोग ले रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाना आसान है, हम बेवकूफ बन जाते हैं आसानी से। आजकल जहां जहां सेसेसिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं वहां क्या कही जा रही है बात? जम्मू कश्मीर ने कहा आजाद हो जाएंगे, हर एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। अरे भैया, पाकिस्तान तो आजाद होकर अलग देश बना लिया, क्या कर लिया उसने? आप देख लो जरा सा, क्या जेंडर जस्टिस की स्थिति है वहां पाकिस्तान में? आजाद कश्मीर में क्या कर लोगे आप? तो उसी तरह वहां पर भी ये मूवमेंट चला, खालिस्तान भी ऐसे ही चला। सिख युवकों को बेवकूफ बनाया कि यहां नौकरी दूसरों को मिल जा रही है, दूसरे लोग चले आ रहे हैं, हमारा जो हम जो है अलग कंट्री बनेंगे, ज्यादा हम स्ट्रांग रहेंगे। उसी तरह साउथ में भी मूवमेंट चला। अन्नादुराई वहां पर चुने गए संसद में तो मेडन स्पीच दी, यानी जो पहले स्पीच दी। अनफॉर्चुनेटली उस स्पीच में क्या कहा उन्होंने कहा, मैं यहां जब चुना गया हूं, मैं मांग करता हूं कि अलग से द्रविड़ नाडु एक देश बना दिया जाए। संसद में बात कही उन्होंने। पंडित नेहरू और उनकी टीम थी घबरा गए कि ये लोग तो संसद पहुंच के संसद में बात कहने लगे, अब क्या होगा? तो उस दौरान 2 कानून पास किए गए। पहला कानून पास किया गया 1961 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। अमेंडमेंट एक्ट जब आता है तो हम समझते हैं कि किसी लॉ का अमेंडमेंट कर रहा है। इट इज एन इंडिपेंडेंट लॉ। इंडिपेंडेंट लॉ है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। उसमें कहा गया कि जो कोई भी भारत के नक्शे को लेकर, भारत की संप्रभुता को लेकर कोई बात कहेगा, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। उसका बहुत यूज नहीं होता। 1963 में पंडित नेहरू ने एक और महत्वपूर्ण काम किया और उन्होंने 16th अमेंडमेंट लेकर आए। वो 16th अमेंडमेंट में क्या हुआ? 16th अमेंडमेंट में क्या हुआ? जो हमारे संविधान में शपथ लेने वाला प्रोविजन है, ओथ टेकिंग, शेड्यूल में है, सारे लोगों का शपथ किस प्रकार लेंगे, उसमें इनकारपोरेट करवाया कि जो भी एमपीज वगैरह शपथ लेंगे, एमएलए शपथ लेंगे, उनको देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ लेनी पड़ेगी, संप्रभुता की शपथ लेनी पड़ेगी कि हम देश के संविधान से बंधे हैं और देश की संप्रभुता से बंधे हुए हैं। अब इसका फायदा यह हुआ कि जो भी साउथ के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे थे, उनको देश की संप्रभुता की शपथ लेनी थी। उन्होंने कहा गया कि अगर देश की संप्रभुता की आप शपथ लेते हैं तो आप फिर ये मांग नहीं कर सकते, अन्यथा आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चला जाएगा। और धीरे धीरे करके फिर 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया, इसको रोकने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी उसका एक हिस्सा था। वायलेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको बाद में 2004 में और 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने संशोधन किया और अभी 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका अमेंडमेंट किया है। तो ये आया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमारे पॉलिटिकल पार्टी ने कई जगह पे दुरुपयोग किया, उसको रोकने के लिए बहुत ही वाइज कदम पंडित नेहरू ने उठाए। पंडित नेहरू से गलतियां हुई, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहना कि पंडित नेहरू कोई कंस्पिरेसी का पार्ट थे, गलती किससे नहीं होती? मैंने अभी कहा आपसे, गलती गोलोकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, फिर केशवानंद भारती में ठीक किया कि नहीं किया?
AK गोपालन में गलत किया तो मेनका गांधी में ठीक किया कि नहीं किया? प्राइवेसी वाले जजमेंट में आकर के ठीक किया कि नहीं किया? तो पंडित नेहरू से भी कई गलतियां हुई। कश्मीर उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, यूनाइटेड नेशन में ले जाना। यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की हमें सीट मिल रही थी, अमेरिका ने ऑफर किया था 2 बार, पंडित नेहरू ने उसको इनकार कर दिया। वो एक बहुत बड़ी भूल थी उनकी, जिसकी सजा अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने कई बड़े काम भी किए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगवाए जो बहुत जरूरी थे। और आज सोशल मीडिया के समय में समझ में आता है कि वो जो रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर अंबेडकर ने प्रपोज किया था और पंडित नेहरू ने उसको साथ में 1951 में डलवाया था, वो कितना जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी कह देता है। आप देख लीजिए, कोई बात कह दे रहा है, कुछ भी किसी के अगेंस्ट पे कोई बात कह दे रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है कुछ मामलों में कि फैक्चुअली रॉन्ग बातें कही जा रही है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते गए। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में 19 जो अमेंडमेंट हुए, 16th अमेंडमेंट 19, वहां फिर अलग से कुछ चीजें डाली गई। आज 8 रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है, हमारे अंडर में रिस्ट्रिक्शंस में है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सोशल मीडिया के कारण जो मोनोपोली थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, अखबारों पर बड़े बड़े चैनल की मोनोपोली थी, वो मोनोपोली खत्म हो गई। अब हमें अपनी बात रखने के लिए किसी अखबार पे डिपेंडेंट नहीं है रहना है। अखबार आप कुछ भेजेंगे, हो सकता है आपकी व्यू को ना छापे, कोई बात नहीं, हम सोशल मीडिया में डाल देंगे। हम आपकी बात से सहमत नहीं है। अखबार ने कोई चीज लिखा, चैनल ने कोई चीज कहा, हम उसकी बात से सहमत नहीं, हम अपना वीडियो डाल देंगे, वीडियो वायरल हो जाते हैं। ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हम एक गलत सूचना डालते हैं, गलत सूचनाएं फैल जाती है। लिंचिंग के जितने भी केसेस हुए हैं जिसमें इनोसेंट लोगों को इस कारण से पकड़ लिया गया कि वो बीफ लेके जा रहे हैं, वो गाय का मांस लेके जा रहे हैं, भड़का दिया गया, झूठ बोल दिया गया, व्हाट्सएप पर मैसेजेस डाल दिए गए कि फला आदमी गाजियाबाद से लेके जा रहा है, फला आदमी यहां लेके जा रहा है, फला मुजफ्फरनगर लेके जा रहा है, और यह सोचे बिना कि उस आदमी के पास क्या है, एक क्रूर भीड़ ने उन लोगों को जान से मार दिया। ये खुशी की बात है कि झारखंड में ऐसी घटना घटी और 1 साल के अंदर उनका कन्विक्शन हुआ झारखंड में। ये खुशी की बात है कि कुछ लीडर्स, जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उन्होंने जो है इसको इग्नोर किया। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग गो के नाम पर ऐसा करते हैं वे वास्तव में गो भक्त नहीं है, वो हत्यारे हैं। तो सोशल मीडिया दुधारू तलवार है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लॉ के लोग हैं, लॉ के लोगों को फैक्ट को ध्यान रखना चाहिए, खास करके सेंसिटिव फैक्ट को। हम हिंदू हैं, कोई बात मुसलमानों के अगेंस्ट पे कह दी गई, हमने उसको धड़ाधड़ 20 जगह पोस्ट कर दिया। कोई बात नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, हमने उसका सच देखा ना झूठ देखा, धड़ाधड़ पोस्ट कर दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करते। हम अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करते, हम उसके अगेंस्ट में जितनी पोस्ट आ रही है सब उसको धड़ाधड़ पोस्ट कर दिया। नो, वी हैव टू फैक्चुअली मेक थिंग्स वेरी क्लियर, and intellectuals have a great responsibility. We all are voters, gentlemen and gentle persons. We all are voters. 18 साल से जितने ऊपर सब वोटर है, और वोटर है तो वोट डालते हैं, और वोट डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंक्लिनेशन किसी पार्टी की तरफ होता है। यदा कभी कभी हम प्रिंसिपल बेस्ड देते हैं और कई मामलों में हम जो है ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं। लेकिन वोटर होने के बाद भी हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। व्हाट्सएप पर पार्टी के प्रवक्ता बनकर हमको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो नहीं करना है। 2 + 2 5 कह दिया, तो हम अगर बीजेपी के सपोर्टर है तो हम 5 को जस्टिफाई नहीं करेंगे। और अगर हम दूसरी पार्टी के सपोर्टर है और किसी ने कह दिया कि जो है दिल्ली इज नॉट द कैपिटल, देहरादून इज कैपिटल, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं करने लगेंगे। हमें चुप भी नहीं रहना है, हमें उनका पोलाइटली विरोध करना है कि आप ये गलत कर रहे हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं। वी हैव बिकम सपोर्टर, वी हैव नॉट बिकम योर स्लेव। एन इंडियन डेमोक्रेसी हैज शोन। जनता पार्टी शासन में आई, इंदिरा गांधी को हम लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया जनता ने, फिर जनता पार्टी शासन में आई, जनता पार्टी को भी उखाड़ के 3 साल में फेंक दिया। राजीव गांधी आए, बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ आए, अगले ही चुनाव में राजीव गांधी को हम लोगों ने हटा दिया और वीपी सिंह आ गए। भाजपा 2 सीट पे चली गई, आज 303 सीट पे आ गई। आप देख सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी में जो वोटर्स है वो किसी को लंबे समय तक रहने नहीं देता।
कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक ये समझ लिया कि उसका तो अब इस पे जो है उसका तो इस पे जैसे लग रहा है कि उसका एक राज हो गया है। आज क्या गति हो गई, दुर्गति हो गई, आप देख रहे हैं कांग्रेस की। कितने दुख की बात है कि हमारे देश में एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। जिस देश में स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होता, उस देश की डेमोक्रेसी बहुत खतरे में होती है। 44 सीट पे है, खुद ही लड़ मर रहे हैं आपस में हर रोज। एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ कहता है। इससे बड़ी बुरी बात डेमोक्रेसी के लिए कुछ नहीं हो सकती कि एक स्ट्रांग ओपोजिशन नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया में हम अपने अपने विरोध की आवाज उठा सकते हैं। सरकार अगर गलत करती है, उसके विरोध की आवाज उठानी चाहिए। सरकार ने सही किया है, उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, उसको हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है। डोंट बिकम ए पॉलिटिकल पार्टी लीडर ऑन व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया। बट अनफॉर्चुनेटली some of them are doing like this. There are channels, news channels. They support one party only. There are some intellectuals. They are always against one party. And I will just give you two illustrations. This Republic channel of Arnav Goswami, only business to support Modi government and Yogi government. This is not the business of an intellectual. Either you accept you are the mouthpiece of a party. Okay, done, कोई बात नहीं है। लेकिन आप कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट मत घोषित करिए, हम इंडिपेंडेंट मीडिया है, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कांग्रेस पार्टी हैज डन ग्रेट जॉब, यू शुड अप्रिशिएट इट, एंड देयर आर मेनी फेलियर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, यू शुड आल्सो अप्रिशिएट दिस एंड टेक अदर साइड व्हाट अदर चैनल्स आर डूइंग। टेक फॉर एग्जांपल वर न्यूज मैगजीन वायर, only agenda to find fault in Modi government. And always they will say we are independent media. तो फैक्ट को सामने रखना है। इंटेलेक्चुअल होने के कारण वी हैव टू प्रेजेंट फैक्ट, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी मिसयूज्ड। एंड जस्ट गिव यू टू इलस्ट्रेशंस। एक बड़े एडवोकेट है, उन्होंने करप्शन के खिलाफ बड़ा काम किया है, प्रशांत भूषण जी। करप्शन के खिलाफ उनकी जो संघर्ष है वो बहुत अप्रिशिएबल है। लॉज को चेंज कराया उन्होंने। पर जैसा होता है ना कि बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जानबूझ के भी गलतियां होती हैं, तो गलतियां उन्होंने भी कर दी। उन्होंने ट्वीट लिख दिया, 2 ट्वीट लिख दिया जून में। पहले ट्वीट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मानते हुए पहले ट्वीट में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट तो लॉकडाउन में चला गया और हमारे चीफ जस्टिस जो है वो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल को जो है एंजॉय कर रहा है। क्या है ट्वीट पहला भाई? ट्वीट पहला है कि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में चला गया और लोगों को फंडामेंटल राइट के वायलेशन के कंटेक्स्ट में कोई न्याय नहीं दिया गया, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई पिटीशन ले ही नहीं रहा है। आइए मैं थोड़ी सी छोटा सा आपको जो है 1-2 में दृष्टांत देता हूं। लॉकडाउन हमारे यहां लगा 23 मार्च को। 15 मार्च को लॉकडाउन लगने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि जो हमारे प्रिजनर्स रह रहे हैं, जो प्रिजनर्स हैं हमारे, वहां पर कोविड फैलने का खतरा है, इसलिए उनको रिलीज करने का रास्ता निकालिए। जिनको 7 साल की जिनकी सजा है, प्रावधान है, उनको धीरे धीरे पैरोल पे आप दीजिए। और ये ऑर्डर जारी किया गया। 24 मार्च को, एक दिन बाद, लॉकडाउन के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड का मतलब हो गया कि आपको अपील फाइल करनी थी 3 महीने के अंदर, आपको जो है कोई मुकदमा दायर करना था, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में डालना था, आपको एफिडेविट देनी थी 4 हफ्ते के अंदर, ये सब लिमिटेशन पीरियड है। तो जो लिमिटेशन पीरियड है ये अगले ऑर्डर तक जारी होता है। लॉ में कहीं प्रावधान नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड प्रोविजन अंडर आर्टिकल 142 ऑन 24th March itself. Then on 6th April, Supreme Court has issued order that due to COVID, physical functioning is not happening. So the High Courts and the Supreme Court will find measures and start robust functioning of the courts on video conferencing mode. 13 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग काम करना शुरू कर देंगे लॉकडाउन के। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हजारों केसेस देखे। कई केसेस थे लॉकडाउन के दौरान। खुद प्रशांत भूषण जी जो है उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई गुजरात में।
उन्होंने ये कह दिया, आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने कुछ सीरियल चलाए, रामायण और महाभारत भी सीरियल चलाए, लोगों ने देखा उसको। तो प्रशांत भूषण जी ने कह दिया, अब देखिए कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दुरुपयोग होता है। कह दिया कि सरकार जो है सोई हुई है और लोग मर रहे हैं और रामायण और महाभारत की अफीम खिलाई जा रही है। अरे भाई, अफीम का वर्ड का उपयोग नहीं भी कर सकते थे आप बोल देते कि भाई ये सीरियल चलाने से कुछ नहीं होगा, यही बोल, अफीम वर्ड का यूज क्यों कर दिया? अफीम का वर्ड का यूज हम कोई अच्छे कंटेक्स्ट में करते हैं? हम और आपके घर में अफीम वर्ड का यूज होता है? बताइए आप, कब होता है? हम जनता के बीच उपयोग करते हैं? अफीम ले लो, अफीम दे दिया, ऐसा कहते हैं? और ऊपर से रिलीजियस कंटेक्स्ट में आपने बात कह दिया। रामायण और महाभारत हिंदुओं ही नहीं, मुसलमानों, ईसाइयों सबके बीच रेस्पेक्टेबल है। धार्मिक ग्रंथ सबके लिए रेस्पेक्टेबल है, मेरे लिए बाइबल और कुरान भी उतना ही रेस्पेक्टेबल है। पर आपने ये बात कह दी, एक एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हो गई तो खैर, एफआईआर दर्ज होती है तो फिर अरेस्ट होता है। अरेस्ट हुई नहीं, अरेस्ट के से बचने के लिए उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि मुझे अरेस्ट से बचाया जाए। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ठीक नेक्स्ट डे, डियर फ्रेंड, नेक्स्ट डे उसकी हियरिंग हुई, उनको रिलीफ दी गई आर्टिकल 32 में, और कहा गया कि इनके ऊपर कोई भी अरेस्ट ना किया जाए फर्दर ऑर्डर तक। विनोद दुआ साहब बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने यूट्यूब पे कुछ डाल दिया, उससे कुछ लोग नाराज हो गए। हमारे यहां देश में लोग जल्दी हम लोग नाराज भी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। हिमाचल प्रदेश में एक मामला दर्ज हो गया। हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है वहां से यहां चली आई इनको अरेस्ट करने के लिए। इतने काम, जरूरी काम बच छोड़ करके, कोविड में चल रही है प्रॉब्लम, आप अरेस्ट करने के लिए यहां से, हिमाचल प्रदेश से यहां चले आए। ठीक है। विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में अगले ही दिन लिस्टिंग हुई। अगले ही दिन उस लिस्टिंग में उनको रिलीफ दी गई कि उनको आदेश दिया जाता है कि उनको अरेस्ट ना किया जाए, कोई कोर्सिव ऑर्डर नहीं हो। लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में गुलाम नबी आजाद साहब जाना चाहते थे जम्मू कश्मीर, लोगों से मिलना चाहते थे, वहां के सांसद हैं, स्वाभाविक है लोग मिलना चाहते हैं। लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम हो रही जम्मू कश्मीर में, अदरवाइज ही बहुत प्रॉब्लम है। लॉकडाउन में और भी डिफिकल्टी वहां हमारे साथ के लोगों को हो गई। वो जाना चाहते थे, सरकार ने मना कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अगले दिन लिस्टिंग हुई और अगले दिन उनकी सुनवाई हुई, उनको रिलीफ दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री, महबूबा मुफ्ती को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में वहां बंद किया गया। आप जानते हैं महबूबा मुफ्ती फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर इतनी इंथुसियास्टिक हो जाती हैं कि वो जो मर्जी कह देती हैं। अभी कह दिया उन्होंने कि हमारा झंडा जो है तिरंगा झंडा कंडीशनल है। अरे भाई, हम तब करेंगे जब 370 वापस होगा। अरे जिस झंडे को लेकर लोगों ने अपनी जान दे दी और जान दे रहे हैं, जिस झंडे को, जो तिरंगा झंडा हमारी आजादी का बाद में प्रतीक बना, हमारी हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक बना, लोगों ने जान दे दी। अभी चाइना में के साथ जो हुआ, संतोष बाबू उसकी टीम ने उस झंडे के लिए तो जान दे दी। आपने ये कह दिया कि झंडा कंडीशनल है। देश के साथ कोई सपोर्ट कंडीशनल होता है? देश के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट होता है। पर आपने ये बात कह दी, खैर ठीक है। तो उनको पहले ही पकड़ा गया था जब 370 का न्यूट्रलाइजेशन कुछ हुआ था। इल्तिजा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची, बोले हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगले ही दिन लिस्टिंग हुई, अगले दिन रिलीफ दिया गया। इसके पहले के केसेस देख लें, जो कोविड के पहले के केसेस हैं। भीमा कोरेगांव मामलों में 5-6 जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया जगह जगह से। रोमिला थापर जो एक बड़ी इतिहासकार है, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। संडे का दिन था, संडे को उन्होंने अप्लाई किया। संडे को लिस्टिंग हुई, मंडे को हियरिंग हुई, हियरिंग शुरू हुई मंडे को। हमारे पास ऐसे कई मामले हैं जिसमें कि अर्जेंट हियरिंग हुई है, लेकिन जब अर्णव गोस्वामी का पिटीशन हाईकोर्ट से रिजेक्ट होकर सुप्रीम कोर्ट आ गया, तो एक बड़े वकील दुष्यंत दवे ने एक लेटर लिख दिया, कहा कि इनका पिटीशन अर्जेंट लिस्टिंग में नहीं जाना चाहिए। दुष्यंत दवे खुद ही कई मामलों में वकील थे जिसमें कि अर्जेंट लिस्टिंग हुई थी। कहने का यह आशय है कि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। उनको, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उनको जो है अपनी जो इंडिपेंडेंस है
वो हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन उनको फैक्ट को ध्यान रखना चाहिए। जो ये बात कही गई कि लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट ने काम नहीं किया, लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट ने अनेक आदेश जारी किए। जनता को भ्रमित करने का काम क्यों करते हैं आप? आपके तमाम फॉलोवर्स हैं, लाखों लोग फॉलोवर हैं, हमारे जैसे लोग आपके स्टेटमेंट पर विश्वास करते हैं, और अगर आप गलत बोल देंगे तो हम तो सही मान लेंगे, हम तो मान लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो हम लोग हैं, आप लोग हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया, हमने पता कर लिया कि फैक्ट क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही में फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन नहीं किया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन किया है? सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश पे प्रोटेक्शन किया है, कुछ पे डिक्लाइन किया है, गलती होगी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जब एक माइग्रेशन यहां से गरीब लोगों का शुरू हुआ, यूपी से बिहार, सॉरी, दिल्ली से, महाराष्ट्र से बिहार जाने के लिए, यूपी जाने के लिए, बड़ी संख्या में सड़क पे बच्चे, परिवार के परिवार पैदल चले जा रहे हैं, भूखे प्यासे चले जा रहे हैं। बड़ा द्रवित करने वाला वो दृश्य था, आप सबने भी देखा होगा। ऐसा लगा सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं हमारे देश में। आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं आप? इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? वार लेवल पे सोचना चाहिए था, इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। इतना बड़ा सिस्टम है आपका, सरकार फेल कर गई, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं सरकार ये नहीं कह सकती कि हाँ अचानक ही पेंडेमिक आ गया, ठीक है, पर सरकार होती किस लिए? इसी काम के लिए होती है। उसके बाद एक पिटीशन डाला गया कोर्ट में, इनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए, इनके लिए बस की व्यवस्था की जाए। अरे भाई, ट्रेन की व्यवस्था होगी, बस की व्यवस्था होगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि सरकार डिसाइड करेगी? सरकार के पास एक्सपर्ट ओपिनियन ये थी उस समय की कि हमें पेंडेमिक को फैलने नहीं देना है। अभी तक ये दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, गांव तक नहीं पहुंचा है, हमको रोकना है उसको। अल्टीमेटली सरकार ने थक हार के वही किया, ये अलग बात है। वो रिजेक्ट कर दिया तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया। तो जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, तो तीन तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। एक मामला प्योर फंडामेंटल राइट वायलेशन का आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर जरूर करना चाहिए। पर्सनल लिबर्टी के मामले जरूर इंटरफेयर करने चाहिए। दूसरा मामला है हाइब्रिड किस्म का, जो पर्सनल लिबर्टी का भी मामला है और पॉलिसी डिसीजन का मामला है। कॉन्ट्रेक्चुअल इशू है, ये पॉलिसी डिसीजन है, क्या पॉलिसी बनेगी, ट्रेन कब चलेगी, ट्रेन कब नहीं चलेगी, मेट्रो कब से चलेगी, ये पॉलिसी डिसीजन है। ये हाइब्रिड मसला है, सुप्रीम कोर्ट को यहां भी इंटरफेयर करना चाहिए और वहां गो स्लो पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरा मामला है नेशनल सिक्योरिटी का, जो Sorry to नेशनल interrupt you, सिक्योरिटी, sir. यस, Because we are sorry to interrupt you, sir. This session is really going very interesting, but because we have a series of events lined up, and this is a stream program, so I would like you to conclude accordingly. just one more minute, thank you. सो नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं, तो जम्मू कश्मीर का मसला जो है केवल फंडामेंटल राइट का नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हजारों की संख्या में लोग वहां मारे गए हैं, हजारों की संख्या में आम लोग मारे गए, टेररिस्ट भी हजारों मारे गए, और हमारे जो है जवान भी मारे गए हैं। तो इसलिए अगर जम्मू कश्मीर के मसले को सुप्रीम कोर्ट थोड़ा स्लो सुन रहा है, इट इज ऑन प्रिंसिपल, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एक लिमिट के बाद नहीं हो सकता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जो कंक्लूड करना, हम ये कह सकते हैं कि कोविड का जो मामला है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है लर्न करने की, एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की। टेक्नोलॉजी को हम लर्न करें, हम हेल्थ सेक्टर को और फोकस करें, हमारे डिस्कशन ज्यादातर हेल्थ पे हो, हमारे डिसर्टेशन, हमारे पीएचडी हेल्थ पे हो, और डिस्कशंस भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों के लिए वो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो बिल्कुल इंटैक्ट है, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए ऑक्सीजन है ये। लेकिन हम सबों को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और खास करके जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लॉ के स्टूडेंट्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कोई भी पोस्ट फॉरवर्ड उसको नहीं करना है। और तीसरी बात है, जस्टिस की जो लड़ाई है वो सबको मिलकर लड़नी है, और उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एडमिनिस्ट्रेशन, थैंक यू स्पेशली नसीम साहब कि आपने मुझे इतनी बड़ी गैदरिंग में लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का अवसर दिया, और पूरे स्टाफ को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लर्नेड फैकल्टी मेंबर है, जो मैनेजमेंट है, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और बहुत ही आपने विनम्रता सुना, मैं लगभग शायद 1.25 घंटे से बोल रहा हूं और मैंने ब्रीच भी कर दिया है। वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, थैंक यू अगेन। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, बल्कि हमको और सुनना चाहते हैं आपको सर, लगातार अच्छा लग रहा है लगातार। थैंक यू। I'd like to repeat Sir's word that our democracy is a very safe democracy in comparison to our neighboring countries, and it is something we should be actually proud about. Thank you, sir, for your very thought-provoking and interesting address. Now I request Mr. Ihsham to come forward and give away vote of thanks.
Thank you, Ramsha. No doubt, based on the changing notions of free speech that have produced increasingly vigorous and sophisticated counter speech, we hope that we can look forward to yet another changing notion of free speech in our society. On behalf of Faculty of Law, Integral University, I give a very heartfelt word of thanks to our chief guest, Dr. Anurag Deep, sir, who spent his busiest time gracing the occasion. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, sir, and this is definitely encouraging us in our future events, sir. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path, sir. We hope, sir, to look forward in future also, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Ehtisham. As the world stepped into pandemic, almost everything turned virtual, and so did our Constitution Day and events. Therefore, as the preparation continues to turn weeks ago and needs determination and bird's eye for knowledge, here we are left with the final round of intra-university debate competition. The topic of the competition is punishing attempt to suicide, adding fuel to fire. Our four finalists are Bibi Manzoor Ilahi Yusra Khanam, LLB second year, speaking against the motion. Sidra Khali, BLLB, third year, speaking for the motion. Saria Khan, BLLB, second year, speaking for the motion. Mona Lisa Shrivastav, BBPH, second year, against the motion. So now I request all the participants to brush up, and we are about to start the debate competition. The rule that I'd like to remind is we have 3+2, that is 3 minutes for your speech and 2 for rebuttal round. So, firstly, I'd like to invite Bibi Manzoor Ilahi Yusra Khanam, LLB second year, speaking against the motion. I guess Yusra is having some problem. I'd request Saria Khan to turn on her camera, and she'll let me know when she's ready. I'll start the time. Saria, are you ready? Yes. Okay, so I'll start the time. You may start. Okay. Can somebody take their own life? A question that is asked by every human mind. A very good afternoon to respected judges, faculty members, my worthy opponents, and the audience. This is Saria Khan, and I'm going to speak for the motion. Suicide has always been a self destructive and self killing act. The concept of taking one's own life has always been a debatable issue. Majority of the study says that psychiatric illness constitutes a major cause for non-fatal suicidal behavior. So don't you think that the person who tries to attempt suicide should be given a second chance rather than getting struck into the legal hazards? Moreover, let us now consider section 309 of IPC, which criminalizes attempt to suicide. This particular section, section 309, was daunted with many controversies regarding its legality and morality over the decades, because this particular section comes under chapter 16 of Indian Penal Code, and all the other offences which are covered under this section are related to categories where harm is caused to human body by another person. But this particular section is a self-destructive act. Seeing this, the Supreme Court of India has recommended that the Parliament should consider the feasibility of deleting this section. Not only this, the Delhi High Court in its landmark judgment has commented that section 309 is an anachronism unworthy of human society like ours. There are a number of cases where we can say, yes, punishing attempt to suicide is definitely adding fuel to the fire. But before jumping into the cases, let us see what does Article 21 of our Indian Constitution says.
It confers the right to live with dignity to every human being. There is a question which is always answered, always debated, and always modified, that whether right to live includes right to die as well. Well, this question was answered in the state of Maharashtra versus S. Mridal, where the Bombay High Court especially observed that all the preventions which are made to prevent suicide by punishing the victim are in vain, because what one requires is medical treatment. What one requires is the support, not the harsh punishments. Therefore, the Supreme Court declared Section 309 to be ultra vires on the ground, as it violated Article 14, that is right to equality of our Indian Constitution. Not only this, it also stated that the right to live also includes right to die with dignity, and considered it as a part of our Indian Constitution. Not only this, the 42nd Law Commission report has suggested scrapping of this particular section. The 156th Law Commission report has suggested deleting this particular offense. Moreover, law has always been dynamic in nature. It keeps on changing as per the needs and development of the society. For instance, the decriminalization of Section 377, it was only due to the changes in the mindset of our citizens. So, why not Section 309? The question arises, why? Because every person who tries to attempt suicide are in vain, are in dark, are in despair. So, in my opinion, what is needed to take care of a suicide-prone person is the medical treatment, wise counseling, and not a stony dealing which is followed by harsh treatment. Thank you. Saria has taken 3 minutes 49 seconds. Now I request the participants whoever have questions with her. I'll start the rebuttal round. Okay. Whoever has the questions, I request the participants to kindly ask. The time has already started. My question is that it is not always that a person who is committing suicide is under extreme stress or is of unsound mind. Some priests and monks have killed themselves in protest, and they were found to be in soundness of mind. What would you like to say on that? Definitely, yes. Please All say the your name. person who are committing suicide, it's not necessary they are in depression or they are in some stress. But according to Section 115 of Mental Health Care Bill in 2017, it is stated that every person who tries to attempt suicide should be considered that the person is in vain, that the person is in stress, and should not be punished under Section 309 of IPC or any other sections. That is why I stated according to the Mental Health Care Bill of 2017. Thank you. Anybody else? We have 1 more minute left. Saria Khan, you asked to give another chance. On what basis you want to give another chance? How can you say that a person will not attempt again? Because not every suicide occurs because of mental health. Because don't you think that I have stated that, don't you think that a person definitely needs a second chance? Because when a person tries to attempt suicide and after that we are striking and we are putting that person in legal hazards, we are imposing several punishments, we are imposing several penalties. So that person needs counseling. As I stated that that person needs wise treatment. As it was stated in the judgment of the Bombay High Court, that every person who tries to attempt suicide should get a wise counseling, proper treatment, and not the stony. And, All right, with this we end. Okay, With thank this you. we end our round. Thank you, Saria. Now I request Miss Yusra to kindly turn on her camera so that I can start. Miss Yusra, against the motion. Honorable judges, respected professors, and all the Let me viewers, start. a Miss very Yusra, yes. your time starts now. Okay. Honorable judges, respected professors, and all the viewers, a very good afternoon.
I'm Yusra from LLB, standing before you to express my views against the motion. Suicide is a self directing injurious behavior with intent to die. We can't accept suicide as a solution of any problem because it will be dangerous for individual and society as well. Andhra Pradesh High Court, in the case of Jagdeshwar versus State of Andhra Pradesh, upheld the constitutional validity of Section 309. In other case, Gyankar versus State of Punjab, Honorable Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 309 and overruled the judgments of High Court. And it held that right to life does not include right to die. It was further held that right to life is a natural right under Article 21, but but suicide is an unnatural termination of life. People always talking about that people in the severe stress attempt suicide. I want to mention here that MHC Act, also known as Mental Health Care Act 2017, which came into force 2018, Section 115, Clause 1 and 2 specially deal the people who have attempted suicide under stress. So these people will come under this section. So every people who commit suicide is not having stress, depression, or mental illness. What about those criminals who has committed severe crime and they don't want to face the consequences, so they die? We all remember the Nirbhaya case. In that case, Ram Singh, who is a main accused, he hanged himself. What about those terrorists who are human bombs and they attempt to kill themselves along with their target? If there will be no punishment, these people will enjoy the benefits. And every person who attempts suicide is not having stress. People attempt suicide in heat of the moment, but another person who really face the difficulties is get influenced and thought that it is the solution of every problem. So punishing attempt to suicide is not adding fuel to the fire. It is a need of our society. It is a safeguard for our society. And so we have to continue this provision. And because I'm giving this debate on the occasion of Constitutional Day, so I want to conclude my statement with the lines of Dr. B.R. Ambedkar, who said that if you have a life, you have to learn self-help because it is the best help. Pain will be released, but till the end, you have to breathe. Thank you so much. All right. Ms. Yusra has taken 2 minutes 55 seconds. Now, I request the participants, whoever wish to ask questions, time starts now for the rebuttal round. Okay, so my question is, don't you think that criminal prosecution and imposition of custodial and financial penalties on those who convicted suicidal behavior constitute an affront to human dignity? Should I repeat? Saya, can you please repeat your question? Yes. My question is, don't you think that criminal prosecution and imposition of custodial penalties on the people who try to attempt suicide constitute an affront to human dignity? I'm sorry, I'm not able to hear you. Okay, I'm repeating it again. My question is, don't you think that criminal prosecution on the people who have tried to attempt suicidal behavior constitute an affront to human dignity? No, I don't think so, because as I mentioned earlier, that every person who attempts suicide is not in stress and is not doing this because of he's having some stress or mental issues. Some people with the intention to hurt others, like I'm talking about the terrorist who doing this, so with the intention to harm others. So when a people is doing with the intention to harming others, how harm dignity of a person? Any other question? All right, with this we end with Ms. Yusra Khanam. Thank you. Now I request Ms. Sidra Khalik for the motion to come up and speak her views.
Um, It is rightly said punishment is the last and the least effective instrument in the hands of legislator for the prevention of crime. A very good afternoon to all present. I, Sidra Khalik of Integral University Faculty of Law is here and I am speaking for the motion. Suicide attempt can be defined as non-fatal, self-directed, potentially injurious behavior with intent to die. Most countries across the world no longer criminalizes an attempt to suicide, but however, India continues to hold it as a punishable offense. Section 309 of Indian Penal Code criminalizes an attempt to suicide by any person. However, Section 115 of Mental Health Care Act states that any person who attempt to commit suicide shall be presumed, unless proven otherwise, that person is suffering from severe stress and that person shall not be punished under Indian Penal Code. Section 115 of Mental Health Care Act 2017 imposes a rebuttable presumption. Keeping in mind that 42nd Law Commission recommended to see Section 309 from Indian Penal Code. The 210th Law Commission report in Jian Kaur versus State of Punjab recommended that Supreme Court focus on the constitutionality of the provision, not whether it shall retain or continue to be a statute. In this regard, the Commission recommended that Section 309 shall be effaced from the statute book since this provision is irrespective of its constitutionality and inhuman. Well, the right to life, which has been mentioned in Article 21 of the Indian Constitution, also aids in giving citizens a right to live a life of dignity. A life with full control is supposedly guaranteed by the Constitution. Liberty is guaranteed to all, but no such right is given to an individual to end his own life with his own will. In P. Sitharaman versus Union of India, the Supreme Court stated that right to live with human dignity merely do not connote continued luxury. In Francis Corali case, the Supreme Court has said that the expression life in Article 21 does not connote merely physical or animal existence, but embraces something more. The right to live includes right to live a life of dignity. It was held that Section 309 was violative of Article 21 as much as right to life include as much as right to die, right to life do not include right to die or right to live a forced life, and the other section interferes with that right. I would like to end by saying that suicide survivors need mental and psychiatric support. Decriminalizing an attempt to suicide will help many of the survivors to come out and seek help, as today they may be afraid for fear of being penalized. Thank you. Thank you, Sidra. Sidra took 2 minutes 46 seconds. Now we begin with her rebuttal round. The time starts now. You said about the I right request to the life. participants. Okay. You said about right to live with dignity. Killing oneself will affect others. Who is that supposed to be dignity to other? Can you repeat your question again? You said about the right to live with a dignity. Killing or yourself will affect other. Who is that supposed to be dignity? See the dignity to others. Firstly, I believe that, as I said, that Article 21 or Article 21 gives citizens the right to live with a life of dignity, a life with full control that is supposed to be guaranteed by the Constitution. Liberty is given to all, but no individual is allowed to kill himself and of his own will. And in P. Sitharaman versus Union of India, the Supreme Court said that human dignity do not connote continued luxury. And similarly, in Francis Colley said that merely people or animal existence of living animals. I guess Sidra has given her answers. So I'll stop it here. Sidra took 1 minute 44 seconds for rebuttal round. We still have for 20 seconds. Anybody else who is interested to ask questions?
All right. So thank you, Sidra. Now I request Miss Mona Lisa, BPTH second year, against the motion to present her views and come and turn on her mic. If you wish to die, die in the race of battle, not in the case of cattle. Good afternoon, all. This is Monalsha Shrivastava from BPT's department, second year student. It is my honor to present myself in front of you all on this Constitution Day. Suicide is never an option. Highlighting the above statement by being against on the motion of punishing attempt is adding fuel to the fire. I begin with known article, that is Article 21 of our Constitution. This right quotes right to life does not, this quotes the guarantee of protection of life and personal liberty to every individual. But right to life does not necessarily signify right to die. There is no any law that say that right to die. Suicide is not a crime, but attempting suicide is a crime. Don't you think nowadays suicide become very common? Sad as it to admit, suicide is a very common term to read in a newspaper. And in my opinion, people do not want to do more struggle. A sudden disappointment or failure, a person attempts suicide, which makes no sense. Every problem has a solution, and some no stand for next opportunity. In 2018, 1,34,000 people commit suicide, which is increased by 3.4% during 2019, which means average 350 suicide per day. To control this increase rate of suicide attempt, we need a strict punishment, and we have Section 309. Section 309 simply punish the attempt of 1 year imprisonment, and I entirely support this punishing act. The most important thing is that not every suicide occurs because of mental health. Neither Section 309 of IPC. Also in Section 115 of MSC, if attempter is found mentally stressed, then appropriate government shall be provide care and rehabilitation. Now, when we look on other side, there will be several occasions where people try to threaten government or higher authorities by trying to kill themselves if their demands are not met. In such cases, that there is a Section 309 is necessary, and there is no one can say that punishing of such person is adding fuel to the fire. The best way to stop such morally bankrupt step is isn't better to give rein of such cases to the law and judiciary? Yes, it is, because punishing such person is necessary, and suicide is never ever an option. Thank you. Thank you, Mona Lisa. You took 2 minutes 49 seconds. Now I request the participants to start with the rebuttal round. Okay, so my question is, many a times a suicidal behavior can be due to poverty or setbacks in finances or family. So, what is the need to punish the victim, because technically it may not be considered as an offense? Like I said earlier, every problem has a solution. We have to see other solution. Government had provide many other opportunity, but I don't think so. Suicide is is the only option that we choose. By killing ourselves, we have to see the other option. And like I said, every no has a next opportunity. I hope Saria got her answer. Do we have any other questions? I assume that's the end. Thank you, Mona Lisa. Yes, okay, thank you.
For the vision of one man, he lends its wings to another. Greetings of the day. Today, Isomaitra Khan, on the occasion of auspicious Constitution Day, is pleased to inform you that Faculty of Law is adventing with a bundle of opportunity made under the parasol of different departmental society for the betterment of students' academic excellence in status quo. The constituted committees are the Constitutional Law Committee, the Environmental Law Committee, and the Legal Aid Committee. The various departmental societies works under the honorable chairmanship of Dr. Naseem Ahmed Jafri. The Constitutional Law Committee is headed under the chairmanship of Dr. Naseem Ahmed, Head and Dean of Faculty of Law, Seema Siddiqui ma'am as faculty convener. For the designation of student coordinator, we have two positions, and for the designation of the respective member of the society, we have three designations. Environmental Law Society. It is headed under the chairmanship of Dr. Naseem Ahmed Jafri, Head and Department of Law. As a faculty convener, we have Dr. Mirza Junaid Beg. For the designation of student coordinator, we have two designations, and for the member of the respective society, we have three designations. Further, for the Legal Aid Society is headed under the chairmanship of Dr. Naseem Ahmed, Head and Dean Faculty of Law. Dr. Abhishek Kumar Singh as faculty convener. For the designation of student coordinator, we have two designations, and member of the respective society, we have three designations. At the very end, I would like to say, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए. अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए. Looking forward for your cooperation and hard working zeal. Thank you. Thank you, Zoma. What a better day to introduce this than today. So, while the results are still being finalized, I'd like to present a piece of spoken word poetry by Raghav Batla on our Indian Constitution. It was a time after independence what saw that some rules we need. Rules needed to govern the country that defines each and every deed. For making our Constitution, the best of Indians had got up. Soon in July 1946, the Constituent Assembly had set up. In August, after independence, the drafting committee set at work. They traveled to many countries to make a draft constitution first. At last, in November 1949, Constitution was fully enacted and adopted. It was signed by our president. It was accepted as it opted. On January 26, 1950, it was fully enforced by this way. Everyone knows that day it was our Constitution Day. Thank you. So I guess the results are ready to be declared now. I'd like to call once again Mr. Ahmed Aman to declare the results. And yeah, so Ahmed Aman, I request you to just unveil the results and bring we are already very there's a lot of suspense, so kindly do the honors. Thank you, Ramsha. Thank you so much. Now, before I declare and announce the results, I would like to tell something. Faculty of Law, in a very short span of time, since September 2016, is striving to organize many lectures, workshops, symposium, national essay, debates, writing competition, and etc. This year also, we organized a series of events for the Constitution Day. And now, it's time for which we all were waiting. It's time to announce the results of these events. Now, I would request all the people to stay calm and cross their finger and hope for the best. I would like to start with the result of the debate. So, in debate, on the basis of four categories, which were style, expression, content, voice modulation, and legal application, the selection committee has decided its result, and I would like to announce the same. The result are, we have one best speaker for the motion. So the prize for best speaker for the motion goes to Saria Khan, BLLB second year Integral University. The best speaker
Against the motion goes to Yusra Khanam, LLB second year, Integral University. After which, now we have the result for essay. The Faculty of Law, Integral University organized national essay competition in which students from all over the nation participated. And now it's time for result. So in national essay organized by Faculty of Law, the first prize goes to Emisa I, who is a student of BLLB third year of Government Law College, Chengalpattu, Tamil Nadu. She bags the first prize. The second prize goes to Khalida Khalid Khan, LLB first year, Integral University. And now, after these two results, I would like to announce the third national competition, which was based on national quiz competition on constitutional law. The first prize is backed by Pushpinder Kaur of Rayat College of Law, Punjab. The second prize is backed by Try Vikram Ji, who is a student of Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi. And the third prize goes to Afifa Fatima, who is a student of BLLB in Faculty of Law, Aligarh Muslim University. So that was the result. Thank you. Congratulations, participant. Thank you, Aman. Our event isn't complete without the Constitution Day pledge. I'd like to call Mr. Sufyan Khan to make it complete. I'm sorry, Mr. Sufyan, your mic is not muted yet. Kindly unmute it. I guess there's some technicality issue. Meanwhile, I'll request Ms. Sania Zaki to give away vote of thanks. We have pledge after that. So I request Ms. Sania Zaki to come up and give pledge, give away vote of thanks. Constitution does not exist to grant you rights those are inherent within you. Rather, it exists to frame a limited government so that those natural rights can be exercised freely. A very good afternoon to all of you. I consider it a great privilege to propose vote of thanks to all the dignitaries who witnessed it as a memorable and successful event. Today, my words are not enough to express my gratitude. On behalf of Faculty of Law Integral University, I would like to thank our chief guest, Dr. Anurag Deep sir, who graced us with his thought-provoking and motivational lecture on freedom of speech and expression, the current trends. I am sure the students, faculties, and all present here will have a lot to take away from this lecture. We are all very inspired by you, sir. I would also like to thank our respected Dean, Dr. Naseem Ahmed, sir, for all the words of wisdom and his guidance.
We will always be grateful to you, sir. Heartfelt thank also extends to Ms. Shipra Mishra ma'am, Dr. Mirza Junaid Beg sir, and all our faculty members for the enormous cooperation in organization of this event. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheel starts rolling months in advance, and we have been fortunate enough to be backed by a team of highly motivated and dedicated batchmates and faculty mates. Last but not the least, I would like to thank all the participants from different universities and colleges from all across the nation. Thank you so much, everyone. I'd once again request Mr. Sufyan Khan if he's okay with the technicality. I request from Mr. Sufyan Khan to come up and give away the pledge. We are extremely sorry for the inconvenience. Somehow, Mr. Sufyan is unable to connect to us, so I'd rather do the pledge ceremony. I request all of you to stand up and place your hands like this and repeat after me. I, as a citizen of India, affirm my faith in the universal principle of civilized society, namely, that every dispute between citizens or groups, institutions, or organizations of citizens should be settled by peaceful means, and in view of growing danger to the integrity and unity of the country, I hereby pledge myself never to resort to physical violence in the case of any dispute, whether in my neighborhood or in any part of India. Thank you. With this, we come
To the end of our event, I request you all to stand up for the national anthem. यार नेशनल एंथम भी बोल दिया। कितना टाइम चाहिए एक बार एक चीज हो तो वो रोके बार बार कितनी रील्स हो रहे हैं और परेशान हो Faculty of Law, ग्लिचेस नहीं है यार, Imperial नेट की University, I प्रॉब्लम है। guess your mic is turned on. गाए सब जयकार, गाहे सब जय गाथा, जनगण मन विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता Thank you की everyone for being a lovely audience. And with this, we come to the end. Thank you, everyone.